Welcome to all the seekers of peace. Today is fourth day of Navratri, and we are going to tap into the very divine and powerful energy of Goddess Kushmananda, a mother, a creator, the one who gives light to the sun, who is sitting at the core of the sun and giving energy to it. Entire universe is getting light and energy from the goddess herself. That's why she is called as the creator of everything. She is the mother of everything. आज हम देवी कुष्मानंदा के बारे में बात करेंगे, जिनको कहा जाता है अष्टभुजाओं वाली, द वन विथ 8 हैंड्स। आपने अगर अम्बे जी की आरती सुनी होगी तो उसमें एक लाइन है अष्टभुजाओं वाली। तो अष्टभुजाओं वाली इज गॉडेस कुष्मानंदा। आप जो भी आपके डिजायर्स है, जो आप भगवान से मांगते हो, आपकी कैपेसिटी सिर्फ दो हाथों से लेने की है, पर गॉडेस की कैपेसिटी जब गॉडेस देती है तो 8 हाथों से देती है। शी गिव्स विद हर 8 हैंड्स। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, वो यहीं से आया है। बिकॉज दैट्स व्हाई व्हेन द गॉडेस गिव्स यू, शी गिव्स विद 8 हैंड्स, and when you receive, you can only receive with 2 hands. And that's why if you recall your life now or in the past, अगर आप अपनी लाइफ को consciously recall करोगे, you will find that you always have more than enough. आपके पास हमेशा जितना आपको चाहिए होता है उससे ज़्यादा ही होता है। Yes, you have challenges. आप बोल सकते हो कि आई हैव प्रॉब्लम्स विद माई ऑफिस कलीग्स, आई हैव माई सैलरी इज लेस, आई कांट पे माई EMIs इन properly, or maybe this person has left me, or maybe I have gone through a divorce, maybe my parents have expired. ये जो आपके challenges है लाइफ के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. Although these are very important, but what I am talking to you, that you have more than enough, I am talking about life itself at the first place. I am talking about food at the table, I am talking about clothes, I am talking about your friends, I am talking about that the money what you have is always more than enough. Yes, you have challenges, financial constraints, but आपको जीने के लिए जितना चाहिए पास्ट में, फ्यूचर में, अभी प्रेजेंट में, आपके पास उससे ज़्यादा ही है. And that is the mindset of abundance I'm going to talk about. Because today, when we tap into the divine energies of Goddess Kushmananda, you will realize that you already have lot of resources, just that you're not realizing it. और हमारे माइंड का एक शॉर्टकमिंग है या प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो नहीं होता है ना, हमेशा हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं. यू मस्ट बी हैविंग 4 or 5 the best of best friends who are always there for you. But most of the time you're thinking about a person who is not talking to you or behave very badly with you. You may be having 2-3 cars in your garage, but most of the time you're thinking about that one car which you call as a dream car. In fact, जो अभी आपके पास cars है वो भी एक टाइम पे आपकी dream cars ही थी. You may be having the best of the family, but maybe when you go to bed in the night you think about that one person who is not with you. तो हम लोग के माइंड का क्रिएशन ही ऐसा है. उसका नेचर is the right word. Nature is like that. It always directs you to the
things and people who are not with you. आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगता था, आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते थे, एक दिन वो इंसान मिल गया आपको, you got married to that person, but now things have changed, you're thinking about someone else, or maybe you're thinking about some other desire. So as long as you don't have things and people in life, you think about them. And because of this nature of the mind, which always puts you into this mentality of scarcity, you don't feel abundance in life. While you are always blessed, not from the day you have came out of the womb, the day when you got conceived in the womb, from that day itself, Goddess Kushmanda is with you. आप जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, तब से ही नहीं, जब आपने गर्भ में कंसीव हुए थे, तब से देवी कुष्मांडा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है. बट हमारे माइंड की नेचर की वजह से हमें बस उसी चीज़ों की तरफ आकर्षण होता है जो हमारे पास नहीं है, और वो आकर्षण भी तब तक रहता है जब तक हमें वो चीज़ें मिल नहीं जाती. The moment you get it, it's gone. That's why they say that you don't value things you have. You only value things you think about things, value things which you don't have usually. So Goddess Kushmananda is always and always with you. And today on the 4th day, we are here to celebrate her, to thank her, and tap into in that divine energies of the goddess. Kushmananda, the meaning of the name. Ku means little. Ushma means warmth. And Anda is egg. A little warm. And the egg comes because she is the mother. She is the root of everything. It says in the story that she is the one who is at the center of the sun and giving light and energy to the sun. So when this feminine energy is everywhere in the universe, she is the one who is giving out energy to the entire universe, illuminating to the entire universe, because without that energy there could be no life on earth. Without sun there could be no life on earth. आपके जो घर में प्लांट्स हैं, आपका शरीर है, या एवरीथिंग, जब तक सनलाइट के बिना कोई लाइफ नहीं. Everything needs light from the sun, and Goddess is the one who provides that. So आज 4th day पे we are here to honor that divine energy of the Goddess. When you say that you are born, आप जब पैदा हुए थे, तो as a soul you have taken a physical manifestation, and your mother was a medium through which you have come to this physical plane which we called as earth. आपकी मदर एक जरिया थी जिसके थ्रू आप इस दुनिया में आए, फिजिकल लाइफ में. बट इफ you have to talk or tap into the divine energy of Goddess Kushmananda, if you have to understand abundance from the real true definition of abundance, you have to see that you are still in the womb of the goddess. आप अभी भी देवी कुष्मांडा के गर्भ में हो. All the mothers who are listening to me, you may have experienced when you were pregnant. Things have changed. The day
you got to know that you have conceived, things have changed. You have changed your eating habits, you have changed the way you walk, you were more careful about your health, you have you were got very conscious about what you're eating. All this happened because of the love you have for the child who is going to come out of you. वो प्यार इतना ज्यादा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कितनी भी चीजें हो जो एक माँ को पसंद हो, ऑल ऑफ अ सडन इन अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड शी लीव्स एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड. And here I am talking about the mother on the physical plane, your mother, and all the divine feeling you have for your mother is very obvious because of the connection you have, the connection of love. So today what I am talking about is goddess Kushmanda, who is the mother of the mother, जिनके गर्भ से आप कभी निकले ही नहीं और ना ही कभी निकल पाओगे आप. वो पॉसिबल नहीं, इट्स अगेंस्ट नेचर. सो व्हेन योर मदर वाज प्रेग्नेंट विद यू, सो इट्स लाइक योर मदर इज इन द वूम एंड यू आर इन हर वूम. Idea is you need to create such mindfulness that जिस तरह आप गर्भ में थे and you had somebody to take care of you, आपको तो कुछ पता ही नहीं था, you were just lying there, but after coming out and becoming conscious you got to know कि okay, there was someone who was taking care of you all day all night. जब आप गर्भ में थे आपको उस चीज की कॉन्शियसनेस नहीं थी, बस एक कनेक्शन था. यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फिजिकल प्लेन एंड यू वर जस्ट लाइंग देयर एंड देयर वाज मदर हु वाज टेकिंग केयर ऑफ यू. To understand that you are still in the womb of the goddess Durga. The incarnation of her is goddess Kushmanda, जिनके गर्भ में आज भी अभी हुआ. तो आप समझिए कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप जब माँ के पेट में भी प्रॉब्लम होता था तो आपसे ज़्यादा तकलीफ आपकी माँ को होती थी. डॉक्टर्स के पास भाग के जाना, सोचना या इंश्योर करना कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो एकदम सही है, हेल्दी है. In the same nature, you understand that you are in the womb of goddess Kushmanda right now as I speak to you. So when you say I have a challenge, I have a problem, this person is not talking to me, this person has left me alone, अब उसके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा जॉब छूट गया, मेरा नेक्स्ट EMI कैसे जाएगा, ये फ्रेंड के साथ मैंने हमेशा अच्छा किया था बट दैट पर्सन इज मिसअंडरस्टैंडिंग मी और मुझसे बात नहीं कर रहा है आज. आई यूज्ड टू लव माय फादर सो मच, लेकिन आज मेरे को वो छोड़ के चले गए. सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर ट्रबलिंग टू अस एंड आई इनवाइट यू on the 4th day of Navratri to develop this consciousness, to give you a reminder that you are still in the home and there's a mother who is more worried for you than you are for yourself. आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आपकी जो फिजिकल प्लेन में आपकी मदर है उनको ज़्यादा तकलीफ होती है. तो आप सोचिए अबाउट द डिवाइन मदर हु हैज सीन यू
not just in this physical manifestation. He has seen you in lots and lots of physical manifestation, in different genders, in different forms, and she has never left you alone. आपको कभी छोड़ा ही नहीं. जब आप एक एज अ सोल, एज अ एनिमल लाइफ आप जी रहे थे, या एज अ प्लांट जी रहे थे, या कोई और जेंडर में जी रहे थे, और वो सब जर्नी पूरी करके आज आप यहाँ पे आए हो. आज भी जो आप फिजिकल लाइफ जी रहे हो, जिस भी जेंडर में जी रहे हो, यू आर स्टिल इन द वूम. शी इज स्टिल वरीड फॉर यू. बहुत बार ऐसा होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि जब आप छोटे थे और रोड क्रॉस कर रहे थे, यू वर क्रॉसिंग द रोड, आपको लगता था बस पॉइंट ए टू पॉइंट बी जंप करके चला जाऊंगा मैं. बट यू हैड समबडी, योर पेरेंट्स, जो आपका हाथ एकदम टाइट पकड़ के रखते थे, और आपको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको मैं छुड़ा के वो साइड चला जाऊं. आपको लगता था कि बड़े होने का फायदा उठा रहा है, मेरे में ताकत कम है तो फायदा उठाया जा रहा है. बट आज आपको पता है, they were holding your hands tightly to save you from the danger. They were seeing something which you are not seeing. आपको नहीं पता है, बहुत दूर से गाड़ी आ रही है जो आप, जिससे आप टकरा सकते हो, अपने आप को हर्ट कर सकते हो, and that's why your parent is holding your hand tightly. आपको दर्द हो रहा है, उनको पता है, but they are okay to give you a temporary pain instead of something which is very dangerous. So in the same way, in the womb, you're still sitting in the womb. I'm talking to you from the womb. You're listening to me from sitting in the womb. And we all are in the same womb. आज आपको लगता है कि there is something which God is not listening to you. God is just not listening to you. जिस तरह बचपन में हाथ माँ बाप ने टाइट पकड़ा था, उस तरह कुछ ऐसा हो रहा है कि that you don't see a way out. कि I don't see that this person has left me, but what next? Who is going to take care of me? Who is going to love me? I'll be left all alone. The management has told you just put down your papers and I just have 1 month. After that, who is going to take care of my family? Who is going to pay my rent, my EMIs? My school fees of my children, who is going to take care of it? So this is the same thing, like in the childhood your parents were holding your hand tightly. These instances which you called a so-called challenge is the same thing. The Divine Mother is holding your hand tight, not allowing you to get the next promotion, not allowing you to be in relationship with a particular person, not allowing you some promotion you're expecting. At the surface level, it seems so unfair, but from the divine level, everything is fair. Because Goddess, she is something, उनको वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा. और you take your life from your own example. Past में चले जाओ, बहुत बार कुछ चाहा होगा, नहीं मिला वो चीज़. You have not got something you were expecting, and today when you look back, you say, wow, thank God वो नहीं हुआ. And then you say, जो होता है अच्छे के लिए होता है. जो होता है अच्छे के लिए होता है. You need a reminder when things are not working in your favor. You need to remind yourself that you're still in the womb and there is Goddess who is taking care of you. And Mother can't be wrong. She can't think bad for you. So when we celebrate Goddess Kushmanda on the 4th day, it's a reminder to ourselves that everything she is taking care of. मुझे खांसी भी आएगी ना तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी मुझसे. मुझे
आसपास मैंने अपने आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर दी है, एक्सपेक्टेशंस की, डिज़ायर्स की, सो कॉल्ड फ्रेंड्स की, लग्जरीज की, पैसों की, कि मेरे को ना वो गॉडेस का प्यार फील ही नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई इन द नवरात्रि when we celebrate goddess every day, it is an opportunity for you to come closer to her. जो आपके पास आया है वही वोम से आया है, जो जाएगा वही वोम में जाएगा. और आप उस वोम्स में घूमते रहते हो. यू टेक डिफरेंट बॉडी, यू टेक फिजिकल लाइफ from your mother on earth, the physical mother, and there is one divine mother, goddess Kushmanda. उनके वोम से आप कभी नहीं निकल सकते और नहीं पॉसिबल है. वो नेचर के अगेंस्ट है. Because goddess wants to take care of you all the time, every moment, even when you're not expecting. बहुत बार ऐसा होता है कि I still remember that जब मैं बचपन में बीमार होता था, और इनफैक्ट बहुत रिसेंटली भी, एंड माई मदर इज़ अराउंड, तो मैं सो भी जाऊंगा ना तो मेरे सर पे हाथ फिराती रहती थी. उनको लगता था मैं सो गया हूँ, लेकिन सोया भी हूँ, नहीं भी सोया हूँ, अच्छा भी लग रहा है, वो प्यार वाली फीलिंग भी आ रही है. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सो भी गया हूँ, बाद में देखा आधे घंटे के बाद उठ के, शी इज स्टिल देयर, शी इज स्टिल देयर. उसी तरह ये गॉडेस है. When you are happy and enjoying with your office colleagues, when you are drinking at home, when you are not remembering God, the goddess is still taking care of you. जब आप बहुत खुश हो, आपको प्रमोशन मिल गया, ऑफिस के कलीग्स के साथ पार्टी चल रही है, या शोरूम से न्यू कार ले रहे हो, या ऑल ऑफ अ सडन द सैलरी क्रेडिट हो गई और वो मोमेंट का जो बहुत सारी खुशी आने लगती है, उस मोमेंट में व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट और फीलिंग गॉडेस, शी इज स्टिल देयर. शी इज देयर before, she was there before you were born, right now, and even when you die, after that also she is there for you. So when we are in the womb of such a powerful goddess who is taking care of us, who is giving us light, life, energy through sun, so why should we care? In fact, the story also goes wherein Surya Dev has come down to earth to see the light. One day he saw that earth is illuminating more, so he came to see what is the source of that light, wherein there were two demons who were doing the tapasya. माली एंड सुमाली तपस्या कर रहे थे शिव जी को खुश करने के लिए. इतनी डीप चले गए थे कि जो बॉडी है वाइब्रेट होने लगी. आप जब आपके अंदर डिविनिटी आती है, आपके चेहरे पे एक अजीब सी सुंदरता आ जाती है, विच इज नॉट योर मेकअप, इट्स अ नेचुरल ग्लो. जो एक फ्लावर में ग्लो होता है, नेचुरल ग्लो, वो फ्लावर ग्लो. एक पेपर फ्लावर होता है जिसमें आप बहुत फ्रेग्रेंस लगा दो, वो भी बहुत सुंदर लगता है, बट यू ऑल्सो नो द रियल इज रियल. तो आपके जब अंदर जैसे जैसे वो डिविनिटी आने लगती है, होती अंदर ही है, जब आप उसको डेवलप करने लगते हो तो एक अजीब सा ग्लो आता है. जैसे आप मसल्स आपके अंदर ही होती है, आप जिम में जाके डेवलप करते हो, उसी तरह डिविनिटी भी आपके अंदर ही है. बट व्हेन यू कम क्लोजर, आपके चेहरे पे एक अजीब सा ग्लो आने लगता है. तो उस ग्लो से सूर्यदेव हैज गॉट सरप्राइज कि कहाँ से एक ग्लो आ रहा है, और उनकी वजह से उन्होंने अपनी जगह छोड़ के वो धरती पे आ गए थे देखने के लिए कि कहाँ से एक ग्लो आ रहा है, और इतना पास आ गए थे उनके देखने के लिए. So these demons who were meditating, they got burned into ashes because he came so close. So goddess Kushmanda was the one who went to the
place of Surya, because without Surya, the world, this planets can't hold, the gravitation can't work. So she was the one who went there and just taken the circular position and illuminated light and fire and created this world again. So every religion has different stories about who created this world. Navdurga, Kushmanda, or Bible talks about that God created. Even Quran talks about God created world in 6 days. बुद्धिज्म टॉक अबाउट दैट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, उसको कभी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. सो द क्वेश्चन ऑफ क्रिएटर डजंट अराइज. सो बियॉन्ड दिस ऑल दीज mythologies wherein everybody has a different view of who created this universe. जिसने भी बनाया बहुत सुंदर बनाया. But that energy I feel is one. You name it with anyone, Goddess Kushmanda or God or Allah, or the science say it's a Big Bang, so whatever it is. But for me, the seeker of peace who is listening to me right now, for me more important is bringing you to that peace and mindset that we all have more than enough. Abundance. आपके पास कुछ चीजें नहीं है, वो हमेशा से रहा है. अपनी लाइफ रिकॉल कर लो 5 साल पहले तक. 5 साल पहले आप 5 अलग चीजें चाहते थे और वो आज 5 की 10 चीजें आपके पास है और आज 10 चीजें और मांगते हो. जब करियर स्टार्ट किया था, यू वांटेड टू बिकम अ मैनेजर. आज आई हैव फ्रेंड्स हु आर हेडिंग द डिपार्टमेंट, running their own company, they are the CEOs. But still if I meet them, they have some other goals. तो ये जो गोल का चक्कर है ना, ये कभी खत्म होने ही नहीं वाला है. एंड एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से कि you deserve all the money. You, with this mindset of abundance, with this consciousness that you are in the womb of the goddess, in fact it will attract you more money, more good health, more love. Everything will come to you more. But understand that abundance is a flow like a river. आपके पास वो रिवर चल रही है, आप उस रिवर में से पानी पीते हो, आप वो पानी दूसरों को ऑफर करते हो, और वो रिवर नेवर एंडिंग है, वो पैसे नेवर एंडिंग है. वो पैसे आएंगे जाएंगे और आपके पास, आप उस रिवर में से छोटा डैम बना के अपने पास भी रखते हो, वो सब होता है. बट डोंट बी like a preserver of abundance. Be a sharer of abundance, because abundance is sharing. So if with that abundance mindset, you need to share. So who created the world is, for me, is secondary. For me, primary is to make reminding you about Goddess Kushmanda on this beautiful 4th day of Navratri, and bringing you closer to her so she could fulfill your desires, give you more wealth, more good health, peace and love that you desire. And at the same time, जो आपकी लाइफ में छोटे मोटे चैलेंजेस है ना, जैसे पानी के सरफेस पे थोड़ा ऑयल होता है, वैसे ही है. आप उस ऑयल को निकाल दोगे, नीचे पानी ही होता है. तो आपका जो सोर्स है, जो आपका रूट है, वो आज भी वैसा प्योर ही है, ट्रांसफॉर्म्ड. जस्ट इट रिक्वायर्ड अ लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन. यू स्टिल हैव दैट एसेंस. सो टुडे द मेडिटेशन पार्ट. Goddess Kushmanda is the rules your heart chakra. Heart chakra. You have to just sit straight. Just sit straight. Keep your eyes closed. And now, when I say that you have more than enough. Now, अब मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, just close your eyes and listen to me. When I say you have more than enough, so
I also say which includes your desires also, जो आपको लाइफ में चाहिए. बट जो लाइफ में चाहिए उसके पहले जो है पहले उसको एक्नॉलेज करते हैं. एट द सेम टाइम you manifest, you do this meditation to manifest your desires. बट इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है. सो whenever you want to manifest things, don't think about it. They say thoughts, words and action, but that is a एक normal एक procedure है which also works. I will I'm teaching you a much faster way. Thoughts, words and action is the first part of it. This part, wherein, for example, let's take an example that you need 10 lakh rupees in your account. Okay. So now you don't have to think, you don't have to see that money in the mind. Because again, the mind will create duality that you don't have, it will create fear around. Goddess Kushmanda stays at your heart. So you just see from the heart. और आप जब अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने हार्ट में लेके जाओगे, व्हेन यू ब्रिंग ऑल योर कंसंट्रेशन टू योर हार्ट, यू कांट थिंक फ्रॉम द माइंड. माइंड में थॉट्स आते हैं. जैसे ही मैं बोलूँगा 10 लाख, आपको वो अमाउंट दिखने लगेगा, आपको बैंक बैलेंस दिखने लगेगा. बट नो, वी हैव टू जस्ट ब्रिंग अवरसेल्फ डायरेक्टली टू द फीलिंग्स पार्ट. So you, whatever you desire, whether promotion, whether your money, whether particular person, think from the heart. But heart का thought process is different completely. Heart's actually thought process is associated with the mind. When I say become conscious about the heart, bring all your consciousness to your heart, and then you feel God promoted. You feel having that money. And now when you feel, you don't see any figure, you don't see the bank balance. Now when you feel, automatically the body starts vibrating. Now when I say that your eyes are closed, take a deep breath, bring all your attention to your heart. Now feel money. Feel money. Feel money. Feel promoted. Feel love. And this feeling is coming from the root. And that root is Goddess Kushmanda. So when you feel this, you are aligning yourself with the vibrations of the goddess, and it will bring to you whatever you desire. So initially when you do this exercise again and again, you will come back to your mind and start thinking about it, but you have to bring all your consciousness to your heart. If you want, आप अपने हार्ट पे हाथ रख लो, दोनों हाथ, एंड इससे आपका फोकस ज़्यादा बढ़ेगा. एंड नाउ with your hands on the heart, feel you have money, lots and lots of money. So much of money that you can pay off your loan right now. So much of everything. So feel this thing that zero debts, completely zero. Everything is taken care of. Zero debt. Whatever you earn, everything is yours. You have more than enough. Now you can share your wealth more with people. Feel that you are loved. Don't think about a particular person. Feel the love of the mother, and she will give you the right person. She knows better than you. Feel the promotion. Feel the respect you're getting in the office. Feel yourself in that cabin you desire. Feel yourself in that company. Feel everything. Come from the heart. And when you come from the heart, Goddess Kushmanda is there to bless you always. So do this exercise before going to bed.
or early in the morning, as soon as you get up. The best thing is going this Navratri, this going in the when you go to sleep. So when you sleep and when you do this, you will find that your body will start vibrating. All of a sudden, you vibrate good energy, you vibrate that abundance mindset, and Goddess Kushmananda will give you with her 8 hands. So I bless you on this wonderful fourth day of Navratri. Everything that you desire, self love, peace, good health, all the love that you desire, and most of all, I look forward that you wake up from this dream of life. Just wake up. Thank you very much. Thank you for giving me your precious time. My greetings to God inside all of you. I'll see you tomorrow. Good night.